In this video, we'll be learning about 4 different points. One is the grid. So you can see this line, horizontal line, and there's another line coming from that point to this point. So there's an intersecting point created just over here. So this intersecting point is the point where we can have the pillars. तो जो भी हम बिल्डिंग बनाते हैं ये बहुत सारे इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बनेंगे, यहाँ बने, उसके बाद आप यहाँ पे बना सकते हैं स्ट्रेट लाइन देकर, उसके बाद आप इस पॉइंट पे भी स्ट्रेट लाइन लेंगे और यहाँ पे एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट बनेगा और यहाँ पे एक पिलर आ जाएगा। सो ये जो स्पेस बन रहा होता है, ये स्पेस, ये जो देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल एंड इस वर्टिकल लाइन के बीच वाला जो स्पेस है, इसको हम लोग कहते हैं बे। और ये जो स्पेस होता है एक्चुअली रूम को क्रिएट किया जाता है। रूम मीन्स अ सराउंडेड स्पेस। ये सराउंड कैसे होता है, ये इस वाले लाइन से और इस वाले लाइन से और एक लाइन इधर से जाएगी और इधर से, ठीक है। तो ये जो चारों कॉर्नर्स बनेंगे यहाँ पे पिलर्स आ जाते हैं और बीच का स्पेस जो होता है इसके अंदर में जनरली पार्टीशनिंग वॉल नहीं करी जाती। दैट्स द ओपन स्पेस विच इज़ कॉल्ड बे। तो हमने अभी ग्रिड के बारे में सीखा कि बे कैसे क्रिएट करते हैं। अब ये समझना है कि ये जो वर्टिकल लाइन है, ये जो एंडिंग पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग 1 2 3 करके ऐसे नाम देते हैं, 1 2 3 4 5 6। अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, यहाँ पे हम लोग A B C D E F G करके नोमेनक्लेचर करते हैं। इससे ये पता लगता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो कि ये 1 है और ये A है, ये वाला पॉइंट। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट, इसको हम बोलेंगे 1A या A1। इस तरीके से इंटरसेक्शन पॉइंट का नोमेनक्लेचर डिसाइड होता है, नेमिंग करी जाती है। इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ कि मान लीजिए दिस इज़, इफ़ यू कैन मूव आउट, दिस इज़ योर 1 and here if it is 2, then this particular 1 to 2 from this point to this point vertically, this can be identified as zone. So this can be called as zone 1, this could be called as zone 2, this could be called as zone 3. Even you can color it. So this could be red color, green color, blue color, and then yellow color, any other color you can take. तो ग्रिड के साथ साथ आपने अभी समझा कि हम इसमें जोनिंग भी कर सकते हैं। तो ये जोनिंग के पर्पस से भी ग्रिड को इस्तेमाल किया जाता है। आपको पता है कि फाउंडेशन करने के लिए किसी भी बिल्डिंग को, फॉर एग्ज़ाम्पल ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग को इरेक्ट करने से पहले सबसे पहले यही ग्रिड वर्क होता है। ग्रिड वर्क होने के बाद सपोर्ट पॉइंट्स को डिसाइड किया जाता है। Support points, for example, this is the support point, another is that is the support point here, there. So these support points are decided based on the intersection point of the grid. Yes, sir. So you must have heard about grid in very light way. Now this is the detail of the grid. Getting my point? Yes, sir. अब इस grid में next point हम सीखेंगे basic of the line in x direction and the y direction. This line, since I'm standing here, so this particular line is the x line. Yes. This is the positive x. Yes. And that side is the negative x. This is the negative x. Upper side is the y, positive y, and this side is the negative y. So now we need to name each segment of x-axis. So this is 1 2 3 4. Likewise on the vertical axis, y-axis, A B C and D. So suppose if you can take that stick, yes, and put it here, straight, yes, move this a little bit this side, yes, and keep it parallel. Yes, that's great. Now understand, if I ask you what is the coordinate of this point, tell me the coordinate of this point.
So from here it is quite obvious this is 1.5. Yes, sir. So this point on x-axis is 1.5. Yes, sir. And if you take the reference from the y-axis, It is first. so this is not first, this is not A. This is less than A. So this is coming somewhere here. So this is the coordinate of the A. point. Suppose this is point P1. So the P1 is reference from this x-axis and then from this y-axis. Likewise, we can take the coordinate of this point. So suppose from here it is say around 1 foot, and from this point, from this axis, x-axis point, this is coming how much? What should be times 4. Almost 4. Yes, sir. So this point away from this y-axis is 1 foot, Yes. but 1.5. away from the x-axis it is almost 4 feet. Yes, sir. So this is how we understand the concept of coordinate. Anything in this world placed somewhere must have a reference. So that reference comes from the x-axis and y-axis. So we suppose this x and y. This x and y could be the grid line also, and it could be walls, or it could be boundary wall. It could be simply a line on the ground which is drawn from calcium carbonate. So if you don't take a reference, you won't be able to understand the coordinate of certain object's position. Yes, sir. So this was about axis and coordinate. What is the last point? Tell me the last point. Quadrant. Let's understand the concept of quadrant. So this particular positive area, this is the plus y and this is plus x. So this is, if we suppose it as quadrant 1, so this becomes 2, 3 and then 4. So you have the idea of orthographic projection. In quadrant 1 we make the drawing, that is called, क्या नाम है? First angle. फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन सिस्टम. 2 में ओवरलैपिंग की वजह से नहीं बनता. कौन सा ओवरलैप करता है? प्लस एक्स एंड माइनस वाई. अब ये थर्ड क्वाड्रेंट है जिसमें ये कौन सा है? ये लाइन माइनस वाई माइनस एक्स, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट. तो यहाँ पे हम कौन सा ड्राइंग बनाते हैं? विच ड्राइंग वी मेक? थर्ड एंगल प्रोजेक्शन. Now this is the fourth quadrant. In this quadrant we don't make the drawing wherein it is plus y and minus x. So this is the fourth quadrant. So generally we make drawing in the first quadrant and the third quadrant, about which we have discussed in the class. Now let me make you understand that if suppose this is the stick, come to this point, मेक इट स्ट्रेट. वाइट को ऊपर कीजिए, वाइट वहीं पे रहने दीजिए, वाइट को ऊपर कीजिए, स्ट्रेट कीजिए इसको और भी. हाँ ठीक है, ओके. अब मुझे ये बताइए, इस पॉइंट पे आइए, इस एंड पे, इधर बैठिए आप. हाँ, सिट डाउन हियर दिस साइड. टेल मी द पोजीशन ऑफ दिस एंड ऑफ दिस वाइट लाइन. इसका कोऑर्डिनेट क्या है? एवरीवन यू कैन ट्राई. व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पर्टिकुलर एंड पॉइंट ऑफ दिस वाइट लाइन? Coordinate, I'm asking coordinate. Coordinate means it is always reference from x axis and y axis. तो आप इस वाले x axis से रेफरेंस कीजिए, कितनी दूरी पे है? लगभग 4 इंचेस, 4-5 इंचेस. किससे? ओरिजिन पॉइंट देखिए, ओरिजिन पॉइंट, दैट इज द ओरिजिन पॉइंट. आप यहाँ देखें तो यहाँ 4 to 5 इंचेस अवे है ये. Yes, sir. लेकिन जब हम वहाँ से देखते हैं ये डिस्टेंस, 2 फुट. तो यहाँ से देखें तो ये 2 फीट पे है. तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि x पे कितना? x पे 4 इंचेस और y पे 2 फीट, 24 इंचेस.
इस तरीके से कोऑर्डिनेट को हम समझते हैं। कोऑर्डिनेट इज वेरी वेरी बिग थिंग इन टर्म्स ऑफ प्लानिंग ऑफ द स्पेस, वेदर इट इज़ इंटीरियर और आर्किटेक्चर। अगर हमें ये पॉइंट्स ना पता हो तो हमें किसी भी स्पेस को प्लान करने में, टेक्निकली प्लान करने में, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। Yes, sir. Hope you have understood all these concepts. Yes, If you sir. have query, if you have any query, let me know. If you have any query, let me know. And if you have any question, you have the question, tell me. Any question? Any doubt? So this class is outdoor class for you, Yes, sir. wherein you are getting involved to understand how we do on ground. Yes, sir. Even before erecting a building, we draw this on site, and then trench digging starts, and then majestic buildings like this you witness such a beautiful architectural wonder by knowing the very basic of about the grids. Thank you very much for watching this video.